जय श्री माता जी। जय श्री माता जी टू ऑल सहयोगीस। अभी हम श्री माता के सामने दोनों हाथ अपने हृदय के स्थल पर खोल के खड़े होंगे। जय श्री माता जी। We will stand in front of Shri Mata Ji with both our palms at the level of the heart. We will keep looking at Shri Mata Ji. श्री माता जी के फोटो को निहारते रहेंगे और महसूस करते रहेंगे दोनों हाथों में वाइब्रेशंस कहाँ कहाँ आ रहे हैं। We'll keep observing where are these vibrations coming. जैसे ही माँ के सामने हाथ खोल के हम खड़े हैं, वाइब्रेशंस की बदलाव महसूस होने लगा है और ये बढ़ते जा रहे हैं। यही हमको साक्षी भाव से देखते रहना है। As you come and stood in front of Shri Mata Ji, these vibrations are increasing and we continue to stay in witness. We close our eyes for a minute and observe. आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए महसूस करते रहेंगे।
जय श्री माता जी। अभी हम श्री माता जी के सामने नतमस्तक होके वंदन करके कुंडली उठा के बंधन लेंगे। With these vibrations in hand, we'll bow down to Shri Mataji, then raise our kundali and take bandhan. अभी बंधन लेने के बाद दोनों हाथ अपने गोद में, सर थोड़ा सा झुका हुआ, आंखें बंद। After raising our kundali, we will sit in front of Shri Mataji, observe the change in our vibrations. वाइब्रेशन का बदलाव महसूस करते रहेंगे। और अभी हम महसूस करेंगे श्री माता जी की बिंदी, अपना ब्रह्मरंध्र, सुषुम्ना नाड़ी और दोनों हाथ। Now with closed eyes, we'll observe Shri Mataji's bindi, our brahmarandra, our sushumna nadi, and both our palms. Just become aware. बस महसूस करना है क्या हो रहा है। श्री माता जी, मुझे ध्यान करना नहीं आता, कृपा करके आप ही मुझे ध्यान में ले जाइए माँ। श्री माता जी, I don't know how to meditate. You only please take me into meditation. Shri Mata ji, please come in our heart and please make our heart worthy of hosting you. श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय में पधारिए और हमारे हृदय को पवित्र, पावन और विशाल बना दीजिए और आपका निवास योग्य बनाइए माँ। अभी दोनों हाथ धरती माँ पे। We'll put both our hands on Mother Earth. Mother Earth, please forgive us that we've been stepping on you with our foot. Please forgive us that we've been insensitive to your love. Oh Mother Earth, please observe all the imbalances in our chakras and nadis. And please bless us with immense patience and tolerance as we get into meditation. धरती माँ, कृपा करके हमें माफ कर दीजिए, हम आप पे हमारे पैर रख के चल रहे हैं। और धरती माँ, कृपा करके हमारे अंदर जो भी असंतुलन है अपने में खींच लीजिए और हमें ये ध्यान के लिए और सहन प्रदान कीजिए माँ।
अभी अपना लेफ्ट हैंड श्रीमाता जी को, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स श्रीमाता जी, राइट हैंड रिमेन्स ऑन मदर अर्थ। अपना तालु भाग से महसूस करेंगे राइट हैंड में क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है। We'll observe from top over it what's happening on our right palm, what's happening in our left palm as we pray. Shri Mataji, please remove all the imbalances, all our past thoughts, all our conditionings from our Ida Nadi and give it to Mother Earth. श्री माता जी, कृपा करके हमारी ईड़ा नाड़ी में जो भी असंतुलन है, जो भी भूतकाल के विचार है, जो भी कंडीशनिंग्स है, उन्हें धरती में विलीन कर दीजिए। मैं अभी अपना तालु भाग से महसूस करते रहेंगे लेफ्ट हैंड की कौन सी उंगली में से ठंडी हवा अंदर आ रही है। We'll keep observing which of the fingers of the left palm are we absorbing cool air. अभी अपना राइट हैंड अपने गोद में, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर, राइट हैंड टुवर्ड्स हिमाचल जी, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स स्काई। श्री माता जी, कृपा करके हमारी पिंगला नाड़ी में जो भी असंतुलन है, जो भी भविष्यकाल के विचार है, जो भी प्रणालिका हम बना रहे हैं और जो भी गर्मी है, कृपा करके आप उसे आकाश में विलीन कर दीजिए। माँ श्री माता जी, please remove all our future thoughts, action, planning, and heat from our Pingla Nadi and give it to ether, the sky element. अभी अपना तालु भाग से महसूस करते रहेंगे राइट हैंड में कुछ आ रहा है कि नहीं, लेफ्ट हैंड में कुछ जा रहा है कि नहीं। From top of our head, we'll observe if we are absorbing something from our right palm and if we are ventilating from our left palm.
आहिस्ता आहिस्ता बदलाव जो आता रहता है वो देखता रहना ही ध्यान है। Witnessing all minute changes that are coming in our nervous system, in our chakras, is all part of meditation. The more we witness, the more the Atma state. ज्यादा साक्षी तत्व, ज्यादा आत्म तत्व। भी अपना तालु बाग से महसूस कर सकते हैं। राइट हैंड में कौन सी उंगली में ठंडी हवा अंदर आ रही है, लिवर ठंडा हो रहा है कि नहीं, लेफ्ट हैंड से कुछ आकाश में जा रहा है कि नहीं। Now we can observe from top of our head which of the fingers are we absorbing cool air in the right palm. If there is a change in the liver temperature and if we are ventilating from our left palm. Now we can bring both our palms down on our lap. अभी दोनों हाथ अपने गोद में, चित्त सुषुम्ना नाड़ी पर। श्री माता जी, please bring us into balance. Please bring us into the present. माँ कृपा करके हमें वर्तमान में ले आइए। माँ कृपा करके हमें संतुलित कर दीजिए। माँ अभी अपना राइट हैंड सर के 2 इंच ऊपर। We'll take the right hand, put it 2 inches above the head. और महसूस करते रहेंगे वाइब्रेशंस आ रहे कि नहीं और ब्रह्म रंध्र खुल रहा है कि नहीं। We'll keep observing if the vibrations are coming and if the Brahma Randhra is open.
आहिस्ता आहिस्ता हाथ को ऊपर लेते जाएंगे जहां तक ये वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं. Slowly, slowly, we will lift our right hand up, and go till where we can feel the vibrations. Now slowly bring your right hand down onto the lap, and put your left hand 2 inches above the head. राइट हैंड को नीचे लाएंगे, लेफ्ट हैंड को सर के 2 इंच ऊपर. फिर महसूस करते रहेंगे वाइब्रेशंस आ रहे कि नहीं और ब्रह्म अंदर खुल रहा है कि नहीं. आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट हैंड को ऊपर लेते जाएंगे. Slowly we'll keep lifting our left hand up till where we feel the vibrations. Leaving our attention on top of the head there, we'll bring our left hand down. चित को वहां ऊपर छोड़ के लेफ्ट हैंड नीचे लाएंगे. फिर से राइट हैंड सर के 2 या 4 इंच ऊपर जहां तक हमको वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं. We'll take our right hand up and put it at a place where we can feel the vibrations. We'll bring our right hand down. We'll do the same with our left hand. अभी अपना लेफ्ट हैंड सर के ऊपर जहां तक वाइब्रेशंस फील हो रहे थे वहां रखेंगे. अभी चित्त को उधर छोड़ के वापस आ जाएंगे. We leave our attention there and bring our both palms down. Now we'll just observe our Sushumna Nadi, Mooladhara to Sahasrara, Sahasrara to where we left our attention. अभी सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी को महसूस करेंगे. मूलाधार से सहस्रार, सहस्रार से जहां ऊपर चित्त छोड़ा है उधर. ये पर सहानुभूति नाड़ी है. This is a nadi that takes us to the heavens. अभी अपने हाथों के सहस्रार को भी महसूस करते रहेंगे. सुषुम्ना नाड़ी और हाथों में सहस्रार. और we'll observe the Sushumna Nadi and the Sahasrara in both our palms. And we'll stay in meditation. इसी स्थिति में ध्यान में रहेंगे. तुमच्या चरणावर येऊन पडलो तरी सुद्धा तुमच्या लक्षात येणार नाही. ती केवढी तळमळ आतून आहे समजलं पाहिजे. डोळे मिटा. ध्यानात जायचं आहे. प्रेमाने. सगळे प्रेमाचे खेळ आहेत.
अगदी शांतपणे डोळे मिटायचे. काही करायचं नाही आहे, स्वतःच ते तुमच्यातलं आहे, ते बीज वर येणार. कुछ भी करने का नहीं, आपके अंदर जो बीज सुप्तावस्था में है वही पनपेगा. आंखें बंद करके अपने विचारों की ओर देखिए. जो लोग बीमार हैं, शारीरिक कष्ट में हैं, लक्ष्मी जी की अवकृपा से पीड़ित हैं, हर तरह की पीड़ा है, वो तो सब ठीक होगी ही. लेकिन जो असली मेहमान है उसका आना जरूरी है. सब लोग मेरी ओर ऐसे हाथ करें. और अभी तक जो भी पीछे का है मरा हुआ, अपना ज्ञान, अपने दुख, अपनी तकलीफें और जो कुछ भी आगे का सोच रखा है, आशा, निराशा और दुनिया भर की चीजें जिससे आप त्रस्त हैं, वो सब को छोड़ करके इस क्षण, इसी क्षण, नाउ एट दिस मोमेंट जागरूक हो जाए. प्रेजेंट में ही जागने से ये चौथा आयाम, फोर्थ डायमेंशन खुलेगा. न तो ये फ्यूचर में है, न पास्ट में है. इसलिए इसी क्षण वो मिलना चाहिए. यही क्षण महत्वपूर्ण है. जहां आप बैठे इसी क्षण वहां कूदना है और उससे आगे भी बढ़ना है. इसी क्षण में जागना ही सहज योग है. स्पॉन्टेनियस सैल्वेशन. हिलना डुलना कुछ न करें. आंख बंद करके अपने माथे के ओर सहस्त्रार पे चित्त दें. जहां फॉन्टनेल बोन होता है वहां पर चित्त दें, वहां अपना चित्त रखें. फोर्स नहीं करें, सहज में ऊपर में सोचें क्या हो रहा है. जैसे यहां बैठे बैठे आप घर की बात सोचते हैं, शांतिपूर्वक. और धीरे धीरे आपके हाथ में पहले हो सकता है किसी किसी को थोड़ी बहुत जलन हो, थोड़ी बहुत, उसे जरा झटक लें अगर जलन हो तो. और अगर जलन नहीं हो तो सीधे सीधे ऐसे ही हाथ रखें और आपको ऐसे लगेगा कि अंदर एकदम ठंडी ठंडी हवा है. और माथे की ओर जब दृष्टि करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई भी विचार आ नहीं रहा है. ये निर्विचारिता की बात है. आप निर्विचार हो जाए. एकदम अंदर से शांत होकर बैठिए. एकदम से शांत होकर मन से कहना, हो गया, बहुत कुछ तो समझा रहा है, मत मुझे समझा कुछ. अब मुझे वही जाना है. यही मन जो आपको बहका रहा है, यही आपकी परीक्षा कर रहा है, उसे कहना बस कर दे. सहज योग समष्टि में बनता है, एक व्यक्ति का नहीं है, एक इंडिविजुअल नहीं है. आप सब एक विराट के अंग के रोम रोम है. एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है. सब एक ही शरीर के अंग अंग है. यह आप जानिएगा. कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, सामूहिक चेतना. आप अकेले नहीं है, आप एक शरीर के अंग प्रत्यंग हैं. दूसरा कोई है ये नहीं, सब अपने ही हैं. इसे आप जानिए.
how to know where you are as far as God is concerned. That's the main thing, isn't it? We are here for that. To be one with God, to be union with His power, to be His instruments. And how our connections get loose, and how we can correct it, we should try to understand that. First of all, we must realize that we are not to think about it. If you start thinking too much about it, then you have seen that you do something funny, which you should not have done. Do not plan out too much about it also. Because in this country, if people start planning out, they'll get all the planning done. For example, they have to go for a walk. Then they must have proper shoes, they must have proper sticks, they must have this, they must have that, and they must have gloves, and they must have everything, and they never go out. They are so exhausted with the planning itself. In the same way, it happens with Sahaj Yoga. So, aane do unko sab. Get in. Move forward. It pretty much happens the same way with Sahaj Yoga. I have seen that, though I have told you not to plan it out, not to think about it, still you go on doing it. And that is how you get into problems. That by thinking you cannot correct yourself. What you can do is to know that you can put bandhans, or you can give yourself a balance with your hands. You have to move your hands and not your brain. Alright? Our brains are moving and hands and feet never move. And out of proportion our brains are moving. But our hands and feet do not move. This is the society which H.G. Wells had described. I can see it very clearly. That you have more brains than your deftness and your understanding. Your fingers are not so sensitive, and the brain leads you to artificiality. So you are not to use your thinking for correcting your chakras. Now should I write it down in golden words? That you cannot think about it and sort it out. This is one thing people do not understand. I think you better take him away because little restless, alright? Now we have got mantras for different chakras. Every chakra has got a mantra which you know. If you do not know, you should find out. Now, if one chakra is catching, then you work on that chakra only and develop your mantra on that. For example, supposing you have to say something for your heart. Then first of all, you must ask for forgiveness from God. That means your attention has not been so much as it should have been on the spirit. Or if you have done any mistakes, ask for forgiveness. You ask for forgiveness. Now, you ask for forgiveness from your heart. Even doing with hand can be artificial. You understand that. It could be just ritualistic, but from your heart. Whatever you have to say, you say it from your heart. Ask for forgiveness from your heart. Not think about it. You see, this is the trouble is. If I say something, then you start thinking about it. And then you said that now I have to take out my attention from the center. And then you start taking out your attention. You cannot. With your brain, you cannot take out your attention from anywhere to anywhere. It's only through your hands or movement of your hands or by saying mantras you bring in. Do you understand that point? Absolutely clear cut. Many people think that if they pay attention to something and pull their attention, you cannot. But what you can do is to, when you are saying the mantra, put your attention without thought to that particular chakra. So you master that chakra ultimately. The one which is a weakness can become your mastery. But if you think, then you are catching again the heart much more. You have known that by thinking you catch your right side in the sense that it starts overactive, gets overactivated, and left side gets frozen up, by which heart is catching. Your ego develops,
which engulfs your heart. So the more you think about it, how to correct your ego, the worse you are. You fight it. So then we know that we have to give a balance, bring down your ego with your hand, with massaging. You can bring it down because in your hand it is flowing. Whether you are catching or not catching, it is flowing from your hand is there. The flow from your hand is there. You may not even receive from me, but there is flow already started. It's germinated. Little bit is always there. Use that to massage your head, bring down your ego. Then for heart also. Do not think about it, but give it. Or you put your hand towards it. Direct the vibrations, but don't think at that time. This is the important thing. If you are thinking and directing, it cannot be directed because your attention is engulfed in the thinking process. Do you understand that point? And here the problem is people think too much and talk too much. I mean, they talk about everything. They know everything. It's such a wasteful habit of thinking and then talking about it. Everybody is a monarch here because of ego. So now please tell your ego, you please keep shut. Now we know you too well. Try to push it back as much as you can. With force sometimes. Bring it back like that. Try to bring it to its normal position. And you'll be amazed once it goes to its normal position. You'll feel very much lighter. So this is to be done with your hand. You can use oil to rub, or on your body if you have to rub, you can use even powder or anything for having less friction. But it is through massage, through giving bandhans, by taking it out, or through limbu, or you can use even an orange or something like that. Try to take out these vibrations through these mediums and not through thinking. Through thinking you cannot do it. Once you think, you have no power over yourself. There's a barrier between the spirit and you. Because you are thinking through your ego. यीशु माता जी, इस स्थिति में हम अपने आप को देखते रहेंगे. We will continue to observe. We can think or we can observe. We will choose observing. हम सोच सकते हैं या साक्षी भाव से देख सकते हैं. तो हम साक्षी भाव से देखते रहेंगे अपने सहस्रार को, जो ऑटोमेटिकली अपना चित्त ऑटोमेटिकली कुंडली के साथ ऊपर चला जाता है वहां, और वहां से अपने दोनों हाथों को thinking is a very bad habit, but witnessing is the good habit that we will develop. माता जी बोल रही है, ये सोचना बहुत बुरी आदत है, तो फिर हम साक्षी भाव में देखना का आदत करेंगे. जैसे हम देखते रहते हैं, सुषुम्ना चौड़ा होता रहता है, सहस्रार बड़ा होता रहता है, दोनों हाथों के सहस्रार भी हिलते रहते हैं. As we continue to witness,
the Sushumna widens, the Sahasrara widens, and the Sahasrara in both our palms also widen. We just have to continue to stay in witness. Because in witness we become a much bigger collective being. क्योंकि हम साक्षी भाव में रहते रहेंगे तो और बड़ा सामूहिक विराट बनते जाएंगे. अभी इसी स्थिति में हम जाके समुद्र में मिल जाएंगे. In this same state, we will go and join the ocean. यानी प्रतिष्ठान, निर्मल धाम और eternal knowledge. जो भी रेगुलर ध्यान में ज्वाइन करते हैं वह ज्वाइन करेंगे. We will go and join प्रतिष्ठान, निर्मल धाम और eternal knowledge session to increase our Virat Shakti. जय श्री माता जी.